डियर फ्रेंड्स, आज हम दिखाएंगे कि एक मोटर और डायनामो कैसे काम करता है। तो हम यहाँ पर दिखाते हैं कि एक मैंने सेल लिया हूँ, यहाँ पर एक मोटर और मोटर कैसे काम करता है। और आज हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे कि मोटर कैसे काम करता है। यू सी, मोटर क्या चीज़ है, व्हाट इज़ ए मोटर, दैट फर्स्ट आई विल डिफाइन व्हाट इज़ ए मोटर। ए मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, दैट इज द फंक्शन ऑफ मोटर। मोटर कैसे काम करता है और कौन प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ए मोटर इज ए डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो हम देखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। दिस इज द थ्री फिंगर्स, द थंब, द फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर, इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दिस forefinger represents the direction of magnetic field, the middle finger represents the direction of current, and this thumb represents the direction of force. That is, this principle works on this method, that is in DC motor, right? Again, I'm explaining what is the DC motor. A motor is a device which converts electrical energy into mechanical energy, and number two is a motor is a device which works on the principle of Fleming's left hand rule. If the three fingers are perpendicular to each other, then this forefinger represents the direction of magnetic field, the middle finger represents the direction of current, and the thumb represents the direction of force. Now I will show you how the motor works, how the electrical energy is converted into mechanical energy. You see here, we have checked, we have taken a cell connecting wires in a motor, and you see how electrical energy is converted into mechanical energy. See here, the fan is rotating, that means electrical energy is converted into mechanical form of energy, and that is the work of a motor. Again, I am explaining, a motor is a device which converts electrical energy into mechanical energy. This is the first point, and the second point is this: a motor is a device which works on the principle of Fleming's left hand rule. And again, I am explaining Fleming's left hand rule. The three fingers, the thumb, the middle finger and the forefinger, if they are perpendicular to each other, the thumb, this forefinger represents the direction of magnetic field, the middle finger represents the direction of current, and the thumb represents the direction of force. And that is the 2 points I have explained in case of DC motor. Again, I am explaining, a DC motor is a device which converts electrical energy into mechanical energy, and a motor works on the principle of Fleming's left hand rule. Now I am explaining the function of dynamo. Dear friends, ये एक डायनामो सेटिंग है। कैसे हम डायनामो बनाए हैं, ये एक डायनामो है, एक रोटेटिंग व्हील है, और ये डायनामो कनेक्ट हुआ है एक एलईडी के पास। तो हम देखेंगे एक डायनामो कैसे काम करता है और ऑन व्हिच प्रिंसिपल द डायनामो वर्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ डायनामो? ए डायनामो इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ए डायनामो एक डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। और दो नंबर है, ए डायनामो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये राइट हैंड रूल है। तो देखिए, ये जो फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड द थंब, इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 degree, perpendicular to each other, then this forefinger represents the direction of magnetic field, the middle finger represents the direction of current, and the thumb will represent the direction of force. This is the Fleming's right hand rule, and the dynamo follows the Fleming's right hand rule. Now I'll show you how the dynamo works in this case. Again, I'm explaining what is a dynamo. A dynamo is a device which converts mechanical energy into electrical energy, and a dynamo works on the principle of Fleming's right hand rule. You see, if the three fingers, forefinger, middle finger and the thumb are perpendicular to each other, the forefinger represents the direction of magnetic field, the middle finger represents the direction of current, and the thumb represents the direction of force or motion. Now you see how this is working. A dynamo, here you see we are rotating this wheel, and you see how electrical energy is producing and how the LED is glowing. You see how it is working. We are rotating this wheel and electrical energy will produce and the LED will glow.
You see here how the dynamo is producing electrical energy. Whenever we are rotating this wheel, हम wheel rotate करते हैं, that mechanical energy is converting into electrical energy. इसको जितना जोर से घुमाएंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा और ये इलेक्ट्रिक जो एलईडी है वो ग्लो करेगा. डियर फ्रेंड, दिस इज द फंक्शन ऑफ ए डायनामो. What is a dynamo? A dynamo is a device which converts mechanical energy into electrical energy, and dynamo works on the principle of Fleming's right hand rule. Dear friends, if you like this video, please subscribe, like and share. Thank you everybody for watching this video.